60 to 70, we have completed almost 60 to 70% of the syllabus here. At this point, what are we left with? We are left with rotation, rigid body dynamics, fluid dynamics, central forces, planetary motion, moment of inertia. These are the topics that are remaining, and these are quite important and maybe a little bit hard topics. तो अभी थोड़ा सा मैं स्लो चलूंगा बिकॉज वी आर एट लेक्चर नंबर 18. मैं कोशिश करूंगा कि आई एक्सटेंड अप टू लेक्चर नंबर 28 या 30, ताकि आई कैन गिव एटलीस्ट 5 or 7 lectures फॉर क्लासिकल डायनेमिक्स लेटर ऑन. ठीक है. सो till this particular point in time, we have only been focused with point mass motion, and we have also been focused with mostly translational motion of point mass objects. Now we are moving forward to what is called rigid body dynamics. So when we talk about rigid body dynamics, we are coming much and much closer to realistic motion that we see around us. हम जो भी मोशन अपने अराउंड देखते हैं, इफ आई थ्रो अ बॉल, इफ आई किक अ फुटबॉल, इफ आई कैरी समथिंग, whatever it is, we usually deal with rigid bodies that has a shape, that has a size, bodies that have a certain amount of mass distribution, bodies where motion is not just related to translational motion but also rotational motion, वगैरह वगैरह. So therefore, one of the important topics to study in mechanics is rigid body dynamics. तो rigid body dynamics में बहुत सारी चीजें आ जाती है. Let me mention few of them. So to first understand rigid body dynamics, we must be familiar with the physics of pure rotation. So first we will restrict our attention to understanding the various physical quantities related to rotation, like angular displacement, angular velocity, angular acceleration, torque, angular momentum, etc., etc. And one very important topic in the context of rigid body dynamics is moment of inertia calculations. So moment of inertia क्या होता है? The moment of inertia of standard objects, the moment of inertia related problems of complicated, configurations, as well as maybe a little bit, we will see. मैं usually moment of inertia tensor काफ़ी डिटेल में पढ़ाता हूँ, but काफ़ी फ़ायदा नहीं होता जैम के स्टूडेंट्स के लिए ना. जैम के स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है. तो लेट मी सी टू व्हाट एक्सटेंट आई वांट टू गो इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर. क्वेश्चंस रिलेटेड टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम, questions related to both translational and rigid body dynamics. So if an object is experiencing translational motion of the center of mass plus rotational motion, so how would we describe the various physical quantities there? Questions related to conservation principles, and collisions involving some sort of a rigid body object. So all these kinds of topics are possible here. तो मैं कोशिश करूंगा that I take at least 2 to 3 lectures in this particular topic. Today, however, I'm going to focus my attention purely on rotation. So let's start with rotation. All right. So most of rotation has to do with some sort of a change in the orientation of some kind of a rigid body. ठीक है. For example, अगर मैं एक simple सा projectile motion ले लेता हूँ. Let's take the example of a football. If you have a football player, let's see if there's an image. Insert pictures from online. Football. Kick. So football kick. All right. So let's say I take this particular image. All right. So here you have somebody hitting a ball, which is something that we are familiar with most of the time. But when you hit a ball, then essentially the ball, what it does is it goes through a certain trajectory. It goes through a certain trajectory. So let's suppose it goes through this kind of a trajectory.
Okay. And as it goes through this particular trajectory, one kind of motion is to study the translational motion involved. That is, what is the trajectory of the center of mass of the football, because the football is an extended body with a certain mass distribution, not necessarily uniform density. But the another kind of study has to do with the rotational motion, because there is a rotational aspect to the football. So if I look at this body at different stages, right? If I look at this body here, if I look at this body at another stage, if I look at this body at another stage and another stage here. So what we will see is, quite simply put, not only the center of mass of the body is going to trace out a sort of a projectile motion, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है, a parabolic path. But what is also going to happen is that this football is also going to experience some kind of a rotation about some kind of an axis. Okay. And of course, that is going to affect the overall behavior of this kind of a football. Okay. We are all aware of it. So overall jo motion hai, the overall motion consists of two things. One is the translational motion of the center of mass, and the other is the rotational motion about an axis passing through the football, or maybe not necessarily passing through the football. इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स. हमने अभी तक सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को पढ़ा है इन डिटेल मैनर. अभी फॉर एटलीस्ट 1 or 2 lectures लेट अस जस्ट स्टडी प्योर रोटेशनल मोशन एंड द एस्पेक्ट्स ऑफ इट. फिर बाद में हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे. ओके. नाउ द बेस्ट वे टू स्टडी रोटेशनल डायनामिक्स is to make a comparison with translational dynamics. Why? Because there are so many different analogs of different physical quantities. Chahe aap angular displacement is an analog for, the displacement of position vector. Angular velocity is an analog for translational velocity. Angular momentum is an analog for linear momentum. Torque is an analog of force. Moment of inertia is an analog of mass. तो एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं, एंड दैट कंपैरिजन विल हेल्प अस कनेक्ट द डॉट्स इन अ मच इजियर मैनर. सो वी हैव लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, एंड वी हैव प्योर rotational motion. Rotational motion. So in linear translational motion, we have something called, okay, so if you have an extended body, let's suppose you have an extended body. Then in the linear or translational motion, the only thing that you're interested in is the translation of the center of mass. While in rotational motion, you are interested in some sort of an axis of rotation and the motion around this axis of rotation. Okay? Around this axis of rotation. And the moment we do that, we encounter different physical quantities. So for example, we encounter what is called position vector for translational motion. What is position vector? Position vector is with respect to some external coordinate system. अगर हमारे पास कोई coordinate system है and a particle is somewhere here at a particular point in time, then we draw a particular vector from the origin, and that is itself the position vector. It gives us an idea about the position of the center of mass of the particle at any given point in time with respect to an external coordinate system. But in rotational motion, we have something called the angular position. Angular position is nothing but theta. So what is theta? Theta is simply the, अगर आपके पास कोई axis of rotation है, let's suppose अगर मैं मान के चलूँ कि this is the axis of rotation for this object, and there is another reference axis. So what is the angular displacement between these two?
ठीक है, मतलब इंस्टेंटेनियस पोजीशन का जो ओरिएंटेशन है और अगर कोई रेफरेंस ओरिएंटेशन है तो उस इंस्टेंटेनियस पोजीशन का जो ओरिएंटेशन है और रेफरेंस ओरिएंटेशन के बीच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इटसेल्फ इज एंगुलर पोजीशन, नथिंग एल्स. Okay, one complete revolution is going to consist of 2 pi. And similarly, we have something called a velocity vector here. What is velocity vector? Nothing but it is velocity. So velocity, agar hum, if we take a time derivative of r, this will give us velocity. That's a time derivative of r. R dot. Okay? And we have angular velocity here. What is angular velocity? Angular velocity is omega. So omega is equal to d theta upon dt. That's it. Or theta dot. So angular velocity gives us an idea about the speed at which the orientation of an object is changing with respect to some axis. We have acceleration here. Acceleration is time derivative of velocity, which is r double dot. And we have angular acceleration here, which is time derivative of omega, which is theta double dot. Of course, there are kinematics equations associated with constant acceleration. आप लोग को पता है कि अगर acceleration constant होगा तो by definition you can derive a few equations connecting the various velocity components. So what are those kinematics equations? You have v is equal to u plus at. So it connects the acceleration, time, initial velocity and final velocity or speed. V square is equal to u square plus 2as. It connects the distance traveled, initial speed, final speed and acceleration. S is equal to ut plus half at square. Same way you also have for constant angular acceleration. Set of equations. Omega is equal to omega naught plus alpha t. So initial angular speed, final angular speed, angular acceleration and time. Omega square is equal to omega naught square plus 2a theta. So angular displacement, initial, final angular speed and angular acceleration. Theta is equal to omega naught t plus half alpha t square, where theta at time t is equal to 0 is 0. Okay, so these are some simple physical quantities and their corresponding kinematics equations in both translational and rotational motion. Now if we go ahead with certain physical quantities, अगर हम physical quantities के बारे में बात करना चाहते हैं तो there also we find these kinds of analogs. So for example, if we talk about momentum, right? So the momentum is very important in physics because we see that there are certain systems where the momentum is a conserved quantity. We also see that the Newton's second law of motion is directly connected to the momentum. In fact, it is a change in momentum which gives us an idea about the total amount of force which is acting on a body. Basically, momentum is a very important quantity, and momentum is defined, especially in the translational motion, as P is equal to mv, right? So which is instantaneous momentum is simply equal to the mass of a body times the velocity of a body, and a corresponding, यहाँ पे just momentum लिख देता हूँ, linear momentum, and the rotational analog is called angular momentum. The angular momentum is equally important because there are certain systems, especially when rotation is happening, angular momentum remains conserved. There is a fundamental equation that describes the motion, especially in rotation, that connects angular momentum with the amount of force that is being applied to a system, right? The time derivative of the angular momentum or the change in angular momentum. How is angular momentum described? बता सकते कोई? Angular momentum का definition क्या है? It is a rotational analog of linear R momentum. cross P I omega. R cross P and I cross omega. P.
सो हम आर क्रॉस पी कब लगाते हैं और आई ओमेगा कब लगाते हैं? When I omega is the special case, I guess, or it is perpendicular. I omega is a special case when we are dealing with a rigid body that is experiencing rotation about an axis. Yes. And R cross P is a more general case for a point mass object experiencing rotation about some coordinate system. ठीक है, तो rigid body को अगर हम as a summation of large number of point masses consider करेंगे तो we can go from here to here. All right. So the definition of angular momentum is we usually write L. तो कभी कभी कुछ किताबों में क्या होता है कि आप स्मॉल एल यूज करते हैं, कभी कभी कुछ कैपिटल एल यूज करते हैं. तो इट डिपेंड्स अपॉन कॉन्टेक्स्ट. द रीजन बीइंग इज दैट बाद में हम जब क्लासिकल मैकेनिक्स थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वहां पे वी विल यूज एल, बट दैट एल वुड मीन Lagrangian. ठीक है, टू डिस्टिंग्विश द Lagrangian फ्रॉम द एंगुलर मोमेंटम हम कभी कभी स्मॉल एल विल बी यूज फॉर एंगुलर मोमेंटम एंड कैपिटल एल विल बी यूज फॉर द Lagrangian. बट क्योंकि मैं अभी Lagrangian डिस्कस नहीं कर रहा हूं तो देयरफॉर आई विल मोस्टली बी यूजिंग द कैपिटल एल हियर. ओके, कुछ किताबों में अलग है, डोंट वरी अबाउट इट. सम बुक्स यूज स्मॉल एल एज एंगुलर मोमेंटम, सम बुक्स यूज कैपिटल एल एज एंगुलर मोमेंटम. इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज इट. So L is equal to R cross P, where P is the linear momentum of an object and R is the position vector with respect to some fixed coordinate system. अगर हमें कुछ fixed coordinate system मालूम है और उस fixed coordinate system के respect में कोई motion हो रहा है तो we can define an angular momentum with respect to certain origin. So yeah, if I want to draw a diagram, so imagine that there is some sort of a motion that is happening. There is a particle that is tracing out some kind of a trajectory. Okay, and the particle is somewhere. It has an instantaneous momentum in a particular direction, P. Now it depends upon the origin of the coordinate system, of course. तो मैं अगर एक origin choose करता हूँ, if I choose an origin like this, so this is an origin, तो ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया y, और ये हमारा हो गया z. So this is an xyz coordinate system. So with respect to the origin, I can create a position vector to the instantaneous position of the particle r, and r cross p is going to refer to the angular momentum. So in this particular example, what is the direction of angular momentum? In perpendicular to plane along z-axis. Positive z-axis. Z-axis. Yes, correct. So if we can draw a plane that corresponds to, if we can draw a plane that corresponds to the r vector and the p vector, then angular momentum is always perpendicular to that plane. Okay, so angular momentum is always perpendicular to that plane. Angular momentum is always perpendicular to that plane. So this is a very simple definition of angular momentum, and the cross product here is a vector product. तो आप लोगों को पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, राइट? क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हियर. If you can represent R as a vector and a P as a vector, then the cross product is going to give you something very, very interesting. So if I can write R as x, y, z, and if you can write P as px, py, pz, then the cross product is nothing but I cap ypz minus zpy plus j cap zpx minus xpz plus k cap xpy minus ypx. ठीक है? So many times when you have to calculate the angular momentum, you need to know the various components involved. So you need to know the instantaneous position vector and you need to know the instantaneous momentum vector. But कभी कभी हम इसको थोड़ा simplify भी कर सकते हैं.
How? Because r cross p is nothing but r cross p is nothing but r p. So r magnitude, p magnitude sine theta in the perpendicular direction. Therefore, we can write r cross p as r sine theta और p sine theta. So कभी कभी हम इसको लिख सकते हैं r perpendicular sine, so r sine theta which is r perpendicular p, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r p perpendicular. एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं. सो फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है लाइक दिस, x y z, ठीक है, और मेरे पास एक गाड़ी है जिसका मैं एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहता हूं. सो दिस इज द कार, ओके, एंड द कार इज ट्रैवलिंग इन this direction, p direction, and the position vector is of course ये r है आपका, ठीक है, दिस इज r वेक्टर एंड दिस इज p वेक्टर. सो हम क्या कर सकते हैं, इफ वी वांट टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू दिस पोजीशन o, then I can take either r perpendicular times p. Are you understanding what's happening? What is r perpendicular? R perpendicular is this. ये आपका है ना. So r perpendicular times p, or we can also take can I take p perpendicular here? p perpendicular ले सकते हैं क्या? p perpendicular कैसे? Yes sir. फिर r के परपेंडिकुलर आए. आर के परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना पड़ेगा. r के पास आ जाएगा वो. सर आप हाँ। R ओरिजिन के से ड्रॉ कर सकते हो, ओरिजिन से आर के परपेंडिकुलर. हाँ, उसको शिफ्ट कर सकते हैं उसके बाद. This one like this. Yes sir. Yes sir. थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना. p perpendicular, just r and p perpendicular, right? So basically ये हो जाएगा आपका. सर हाँ जी. सर ये मोशन तो लीनियर है, तो हम लीनियर मोशन का भी एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं. हाँ, कार तो मैं- आगे ही जा रही है. हाँ मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ मैं अभी. ये हो गया ना, इज दिस करेक्ट? Yes ये sir. चलेगा. हाँ, तो ये हो गया आपका p परपेंडिकुलर. यूजुअली p परपेंडिकुलर हम नहीं लेते हैं, r परपेंडिकुलर, बट डिपेंड करता है, वो कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है. तो मैं इसको p परपेंडिकुलर लिख देता हूँ, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू r एंड p परपेंडिकुलर. तो बहुत बार क्या होता है, यू विल फाइंड दैट इन सर्टेन काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस it depends like how you want to perform the calculation. If you are given some vectorial notation, this calculation is easy to perform. If you are given some angle, this calculation is easy to perform. If you are given with respect to some coordinate system, either this or this calculation is easier to perform. Ultimately you will end up getting the same answer. Now coming to your question कि क्या translational motion में हम कोई rotational physical quantity को define कर सकते हैं as long as we have either an external origin or an axis of rotation. तो यहां पे आप नोटिस कीजिए कि this is very much dependent on the choice of the origin. Don't you think? The angular momentum is dependent on the choice of origin.
मैं अगर origin कुछ और choose करूंगा तो by definition the angular momentum is going to change. Yes or no? Yes. अगर मैं इसको origin choose करूं, if I choose the center of the car as the origin, then angular momentum will automatically be equal to 0. Don't you think? Yes, sir. Yes. If I choose some other coordinate system, then angular momentum can increase or decrease. So you have to understand that the angular momentum is very much dependent on the choice of origin. तो ये important point है that L always depends upon choice of origin. Upon choice of origin. Now सवाल ये पैदा होता है कि आपको तो ये ट्रांसलेशनल मोशन दिख रहा है इन द सेंस कि ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. So the question is, can we define some rotational quantity like angular momentum with this motion? Yes, we can. क्यों? क्योंकि अगर हम इस पार्टिकल को यहां पे देखें और बाद में जब ये पार्टिकल यहां पे होगा तो there is a rotational component that is associated with this translational motion also. Don't you think? इनिशियली अगर पार्टिकल यहां पे है और बाद में अगर पार्टिकल यहां पे है तो अगर हम रोटेशनल हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखें, अगर आपकी आंख यहां पे है, अगर यहां पे आपकी आंख है तो आपकी आंख इस गाड़ी को देखते देखते रोटेट कर रही कि नहीं? Yes, sir. कर रही है. तो देयर इज अ रोटेशनल कंपोनेंट दैट इज एसोसिएटेड विद दिस मोशन. इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, वी डिड अ क्वेश्चन दैट केम इन टीआईएफआर व्हिच इज रिलेटेड टू समथिंग लाइक दिस. जब हम रेडियल मोशन को स्टडी कर रहे थे, इफ यू गाइज रिमेंबर, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस और नॉट, we were studying radial motion, chapter number radial motion हमने एक क्वेश्चन नहीं करा था? अच्छा, मैंने क्लास में नहीं करा था. आई थिंक डिस्कशन ग्रुप में मुझे किसी ने पूछा था तो मैंने उसका जवाब दे दिया था, बट वी डिडंट डू दैट क्वेश्चन ऑन क्लास. So there is a question on एक सेकेंड. Okay, so there was a question from TIFR. मुझे नहीं I think I did not do that in the class. I think somebody asked me in the discussion group, तब मैंने उनको सॉल्व करके दिया था. वो क्वेश्चन ये था कि एक एरोप्लेन है एंड दैट एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन अ स्ट्रेट मैनर, और एरोप्लेन को नोटिस करते हुए एक रेडार सिस्टम है. ठीक है, एक रेडार सिस्टम है जो एरोप्लेन को नोटिस कर रही है, एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द रेडार इज हियर. और थोड़ी देर बाद एरोप्लेन जब यहाँ पहुंचती है तो रेडार विल फेस दिस साइड, राइट? And they asked what is the instantaneous value of the rotation of the radar system, which was following an aeroplane which was traveling at a particular velocity. Yes, sir, that was an assignment question. Yes. So this is a very good example of what we are discussing here. Even though the aeroplane itself is in a translational or a linear motion, but the antenna or the radar or the camera which was following the trajectory of the aeroplane is experiencing some rotation. So depending upon an axis of rotation or an origin of a coordinate system, we can always define an angular momentum associated with even a translationally moving object. ठीक है, हम डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो रेलिवेंट हो या ना हो, वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है. इस प्रॉब्लम में तो इट इज अ वेरी रेलिवेंट टॉपिक. लाइक एरोप्लेन को एक कैमरा स्कैन कर रहा है, जैसे जैसे एरोप्लेन आगे बढ़ रही है तो कैमरा इज रोटेटिंग, तो दैट देयर इज एन ओमेगा व्हिच इज एसोसिएटेड विद दिस v, and there is also an angular momentum associated with the p. तो वही है. So depending upon the question, we can define an angular momentum as long as there is an external origin या axis of rotation involved. ठीक है, clear है? Yes, sir. Is it clear? Okay, all right. Now let's move forward. Angular momentum is a very important topic, very very important topic. क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि it plays a very important conservation principle in certain kinds of systems, as well as it is related to
the Newton's second law of rotational motion. Now, even though this is the main definition of angular momentum for a point mass object, what happens if instead of dealing with a point mass object, we are dealing with some, let's suppose, rigid body? ठीक है? Now, for example, हम अगर Earth की बात करते हैं, if you know that when we talk about the Earth, we are talking about the Earth's rotation. So there are different kind of things that we can talk about. So for example, we can talk about the rotation of the Earth around the Sun. So when we talk about the rotation of the Earth around the Sun, then we can imagine the Earth to be a point mass and the Sun to be the origin of a coordinate system. And using R cross P, we can calculate what is known as the orbital angular momentum of the Earth. But we also know that the Earth revolves around an axis of its own, जिसकी वजह से दिन रात का एक distinction होता है. Now that is corresponding to what is known as the spin angular momentum of the Earth. So depending upon like what is the nature of the sort of motion, we can distinguish between both these two things. अगर हम point mass की बात करते हैं, point mass का motion with respect to an external origin, then we are talking about R cross P. लेकिन अगर हम point mass की जगह, we talk about the collection of objects, and a rigid body which is made up of a large number of point masses, and those point masses each contribute towards the angular momentum, then the total angular momentum of the rigid body, is a summation of the individual angular momenta of the point masses which are going about a particular axis of rotation at some angular velocity omega. And as a result, the calculation, I will not derive it. If you want, you can check out Kleppner or any standard textbook. वो एक बहुत simple derivation है, वो आप कर सकते हो. Comes out to be something called I omega. ठीक है, I omega. Now this I omega is very similar to this expression, ये वाला expression. Okay, जो हम linear momentum के लिए we use the definition of P is equal to mv, where v is the instantaneous linear speed, यहाँ पे omega is the instantaneous angular speed, m is the mass, and I is what is known as the rotational analog of mass. Okay, so यहाँ पे omega is the angular velocity and I is the rotational analog of mass known as moment of inertia. मैं आज moment of inertia के ऊपर discussion नहीं करूँगा because this itself is a very large topic. अभी मैं just basics की बात कर रहा हूँ. We will spend the next class which is परसों या जो भी है, वहाँ पे we will discuss much more about moment of inertia. But what is important to be noted is that moment of inertia plays the same role in rotation that mass plays in linear or translational motion. What is the role of mass? आप लोग को याद होगा, in our first lecture we talked about mass as a measure of the resistance to translational motion. तो अगर मैं किसी भी object के ऊपर कोई force लगाता हूँ, तो what is the amount of acceleration that the object experiences depends upon its mass. अगर mass ज़्यादा है तो it will experience less acceleration. अगर mass कम है तो it will experience more acceleration. So the amount of resistance or the amount of inertia that any object offers to some external force is the mass. उसी तरीके से moment of inertia is the amount of resistance that an object offers to an external force to rotation. अगर हम rotation की बात करते हैं कि an object is moving with some angular velocity omega, उसके ऊपर अगर मैं कोई force लगाता हूं तो omega becomes omega dash. तो what is the angular acceleration involved? So greater the moment of inertia, lesser the angular acceleration. Lesser the moment of inertia, greater is the angular acceleration. Of course, mass and moment of inertia are not exactly equal. Mass is somewhat of a more simpler quantity. Moment of inertia is a little bit more complicated quantity because not only it depends on the mass, but it most importantly depends upon the mass distribution. So yeah, this takes into consideration mass distribution. But we will talk about it in much more detail later on. So moment of inertia is playing the same role as mass, but it also is taking into account the mass distribution of some sort of an object which is experiencing this rotational motion. Okay, so this is the angular momentum.
If we are talking about a point mass with respect to an external origin, we can use this example. If we are using some rigid body or a system of particles which is experiencing a rotation about some axis, common axis, then we can use the second expression. Okay. Now the angle of angular momentum is related to what is known as torque, or we can say force. तो जब हम ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते हैं, we talk about force. You know what is force? Force क्या है? Well, we know that force is anything that you push or a pull, anything that you can push an object or pull an object. But of course, force plays a much more important role in the context of mechanics and in terms of the definition. So what is the definition of force? Anything that cause a change in the मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो द फोर्स इफेक्टिवली चेंजेस दैट वेलोसिटी. ओके, सो द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू ma फॉर अ पॉइंट मास. ओके, उसी तरीके से यू हैव अ ट्रांसलेशनल एनालॉग, rotational analog to force, which is known as torque. So what is torque? Torque is, quite simply put, R cross F, the rotational analog of force. जैसे angular momentum is R cross P, torque is R cross F. R cross F. Okay, so you can define torque in all kinds of ways. You can define torque as same way. यहाँ पे अगर मेरे पास if I have a vectorial notation of the position as well as force I, j, k, so x, y, z, fx, fy, fz, so this can be written as I cap yfz minus zfy, yfz minus zfy plus j cap zfx minus xfz plus k cap xfy minus yfx. इस तरह से, या फिर in the same way we can also define as r vector f vector sin theta acting in some direction perpendicular to the plane containing r and f, या फिर जिस तरह से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है r perpendicular f in terms of magnitude अगर बोले तो r perpendicular f or r f perpendicular, which is also relevant definition in terms of magnitude. In terms of magnitude, and of course अगर मैं इसको जैसे पॉइंट मास के लिए अगर कर रहा हूं तो दिस इज द डेफिनेशन r क्रॉस f. अगर मैं कोई रिजिड बॉडी के लिए कर रहा हूं, just like we have two different definition, rigid body is essentially nothing but the dynamics of system of particles, nothing else. So we can just extrapolate from the expression for a point mass to that of a system of particles, which simply involves a certain amount of calculations जहाँ पे we do a summation of all the point masses. तो बाद में it becomes simplified to this particular expression, which is I alpha. Okay, I alpha. जैसे यहाँ पे m alpha था, यहाँ पे I alpha है, ठीक है. So this is similar to this particular expression. If you notice, यहाँ पे m was the mass, यहाँ पे I is the moment of inertia, which I said is a rotational analog of mass, translational acceleration and angular acceleration. Okay. Now, the moment we define torque in this particular manner, we automatically come up with the Newton's second law. So what is the Newton's second law? So वही F is equal to ma, but more specifically dp upon dt. Newton's second law plays the role of not just connecting the momentum with the force, but also as a definition of force. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इट्स एन ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ फोर्स. तो अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो व्हाट कैन वी डू? सो व्हाट कैन वी से? वी कैन से दैट the Newton's second law
for rotational motion. Second law for rotational motion. तो यहाँ पे we start with angular momentum which is equal to r cross p. Now if we do a time derivative of angular momentum dl upon dt, so this can be written as d by dt of r cross p, which is nothing but dr by dt cross p plus r cross dp upon dt. So what is this? This is what is dr upon dt? Dt is nothing but this is v cross what is p? P is nothing but mv plus r cross f. So dp upon dt is f. What is v cross v? ये आपका expression हो जाएगा 0. So therefore this becomes r cross f, which is nothing but torque. So therefore torque is equal to dl upon dt. This will constitute the rotational analog for the Newton's second law. So the amount of torque experienced by a body is nothing but the time rate of change of angular momentum experienced by that body. Okay, so rotational analog of Newton's second law. And this also leads to the conservation of angular momentum principle, that if you have an isolated system, for isolated systems, and not just isolated systems, this is also true for other systems where the net force balances each other out, but for safe purposes I'm writing isolated systems. If overall torque is equal to 0, जो भी net torque है, for whatever reason, maybe the forces cancel each other out, maybe the forces act in such a manner that it doesn't create any resultant torque, then what happens? It automatically leads to dl upon dt is equal to 0, and therefore L is nothing but a constant. So in systems where the effective torque is equal to 0, the angular momentum is a conserved quantity. So this is known as conservation of angular momentum principle, which is an equally relevant principle, conservation of angular momentum. Okay? And what is interesting about conservation of angular momentum is that it is a conserved quantity not just in terms of its magnitude, but also in terms of its direction, because it's a vector quantity. So both magnitude and direction of angular momentum remains conserved in the absence of external torque. Okay, which is very important. We'll come to questions related to this particular thing, conservation of angular momentum. आप लोग मुझे कोई example दे सकते हैं? Conservation of angular momentum is a very important principle, but can you give me any example from physical world जो आपने notice किया है या देखा है? हाँ जी. Planetary motion. Can you elaborate a little bit? Yes, sir. When Earth moves around the sun in the plane, it's same plane, because the Earth moves around its plane because its angular momentum is conserved. So it's plane, it's same plane basically. Also सर एंगुलर मोमेंटम जैसे r क्रॉस p होता है, तो जब अर्थ सन के पास आएगी तो उसकी जो है स्पीड पे मतलब उसके हिसाब से डिफरेंस पड़ेगा. अगर r कम हो गया तो p mv होता है तो v बढ़ जाएगा, तो अगर r ज्यादा हो गया तो v कम. mv1 r1 is equal to mv2 r2. सही है, correct है. So there are many examples. So if I give you examples of conservation of angular momentum, so
let us talk about examples here. So पहला example जो आपने बताया, that has to do with planetary motion. So if we talk about planetary motion, what happens in planetary motion? In planetary motion, we are dealing with what is called central forces. Gravitational force is a central force. Central force is a very important topic जो हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे after rotation and rigid body dynamics is over. So central forces are forces which act along a straight line and whose magnitude is directly proportional to the distance connecting those 2 points, right? तो अगर हम planetary motion में torque को calculate करने की कोशिश करते हैं, so if we try to calculate the torque in planetary motion, so that comes out to be R cross F, okay? But by definition, since we are dealing with central forces and gravitational force, one example of central forces, gravity is a central force. So therefore, this comes out to be R cross F of R, R cap. Okay, so this is nothing but R cap, R F R, R cap cross R cap. तो R cap cross R cap क्या होगा? Sin 0 पूरा 0 हो जाएगा. So if this is equal to 0, that means dl upon dt is equal to 0, which means the angular momentum is a constant. So this angular momentum being a constant plays a very important role, especially in planetary motion, because if you look at the let's suppose the trajectory of various planetary orbits, ठीक है, अगर हम किसी भी planetary orbit की बात करते हैं, let's suppose Earth हो या Mars हो या कुछ भी हो, because angular momentum is conserved, so therefore the direction of angular momentum, let's suppose, is always perpendicular to the orbital plane. Okay, so let's suppose this is your planet. The direction of angular momentum is perpendicular to the orbital plane, and because angular momentum is conserved or a constant, so therefore plane of orbit is fixed in space due to conservation of angular momentum. जो plane है वो fix रहता है, इसलिए if you look at the plane of the solar system, the earth doesn't go around the sun in some sort of a spherical complicated motion. earth का motion ऐसा नहीं होता है. जिस तरह से हम एटॉमिक मोशन को देखते हैं, अर्थ का मोशन ऐसा नहीं होता है, या किसी भी प्लैनेट का मोशन सन के अराउंड स्फेरिकल सरफेस में नहीं होता. अर्थ का मोशन होता है लाइक दिस ऑन अ फिक्स्ड प्लेन, व्हिच इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग. और ये प्लेन कब डिसाइड हुआ? दिस हैज टू डू विद द ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम, जब सोलर सिस्टम क्रिएट हुआ था. एंड इफ यू नोटिस द प्लेन ऑफ द वेरियस प्लैनेट्स, majority of the planets have a similar plane except for 1 or 2 planets, I guess. वो बाद में maybe due to collisions with moons and stuff, वो orbit थोड़ा सा change हो गया. But overall ज़्यादातर planets का जो plane है, planets का जो orbits का plane है, वो somewhat similar ही है, right? And you see the motion happening in a certain plane mostly, and not on some sort of a spherical surface. So that is the first example. Of course, the second example, जैसा आपने बताया, has to do with the velocity. That if we look at the sun to be somewhere here, आपको पता है that the orbit of a planet is in an ellipse. It's an elliptical orbit. So therefore, there is something called the perihelion and something called the epihelion. Okay, and if you have a certain velocity at the perihelion, and if you have a certain velocity at the epihelion, so because of the conservation principle, just give me a moment.
Sir, voice. Yeah, sorry. Actually, एक teacher का call आया था. He is taking a different class. So I had to attend. Okay, I have a couple of chats. मैंने देखा नहीं, अभी just notice किया. Vivek, the derivation conservation of angular momentum that you have done is carried for a point mass, right? देखो, I am not engaging in a much rigorous derivation. But yeah, you can say that. L is equal to R cross P is the definition of the angular momentum. And R cross F is a definition of torque. So torque is equal to dl upon dt. So it is not only valid for a point mass, it is also going to be valid for the rigid body. Vivek Kumar, बताइए, is it clear? Yeah, you want to know something else? Vivek Babu, sir, I understood this completely. Can you explain orbital plane part one more? What exactly you want me to explain? The direction of angular momentum is a conserved quantity. And because the direction is a conserved quantity, so therefore the planetary orbit is fixed to a plane. Direction cannot change, right? Direction ये नहीं हो सकता, direction ये नहीं हो सकता. Direction is fixed in space. So therefore the planetary motion is always happening in a plane. Because planetary motion में क्या चाहिए? R cross P, right? So R cross P जो है, इसका जो direction है, ये fixed है in space. That is all I am saying. Make sense? Okay. So the R cross P direction is always fixed in space. So R can change, P can change, but the R cross P is unchanged. और इसका direct consequence ये है कि that the planetary motion is always happening in a plane. The plane is never going to change, right? And दूसरा consequence ये है that mv1r1 is equal to mv2r2. So the velocity at nearest point को क्या बोलते हैं? पेरीहिलियन बोलते हैं, या पेरीहिलियन, हाँ पेरीहिलियन ही बोलते हैं, पेरीजी भी बोलते हैं, पेरीहिलियन. ज्यादा होगा या कम होगा? इज ज्यादा या कम? ज्यादा होगा. इज मोर compared to orbital velocity at the farthest point. Farthest point means it's called aphelion or apogee, right? Any other example of conservation of angular momentum? Have you guys seen any other example of conservation of angular momentum? बताइए. Have you anything that you have seen? Rotating chair when we are far. Rotating chair. So whenever there is a Yes, no sir. no external torque, there is Sir, always and conservation of angular momentum. So any example? सर जैसे वो दिखाते हैं, उसमें एक बंदा बैठा होता है, उसके हाथ में मतलब दो डंबल टाइप होते हैं, तो मतलब पहले बहुत दूर होते हैं तो उसकी स्पीड हल्की होती है, और फिर वो उसको पास ले आता है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. Yeah, ये example हम Olympics. Go ahead. I also mean same thing, sir. Oh, like they take a dumbbell and they are rotating and then they bring it closer to each other. This example? Yes. Yes, sir. And the velocity changes. Yes, correct. So that is. So have you guys seen this? Like in Olympics, there is a game called ice skating or something like that, where it's like more like gymnastics on slight amount of like. You see, there's a man and there's a woman and sometimes singular players who are skating in ice and they're performing different gymnastic movements. And sometimes what they do is they will start rotating in a specific plane. Like, have you seen this?
Same Yes, example, sir. I guess आपने जो बोला होगा. So they start rotating like this, and when they bring their hands closer to each other, their velocity increases, omega. And then when they take the hands far away from each other, their velocity decreases. So that is also I mean, दोनों example same ही है. Example of conservation of angular momentum, that when you have like L1 is equal to L2, when you have two different configurations, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. So what is I1 and I2? I1 and I2 are basically the moment of inertia, and moment of inertia depends upon mass distribution. So moment of inertia का formula है essentially summation of mr square. So when हाथ दूर होते हैं ना, तो r is greater, so moment of inertia is greater, so omega is less. When you bring the hands close, whether you are an ice skater or whether you are somebody with a dumbbell on a rotating chair, when you bring your hands close, तो क्या होता है, ये decrease होता है, moment of inertia decreases because the entire mass distribution come close to the rotation axis, and फिर omega increases, the speed at which you are rotating increases. Okay, that is a good example. All right. All right, guys, let's move forward. यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया? Have you understood everything till this particular point? Yes. Sir, Yes. one thing I don't understand. There's a theta doesn't have a direction. So why d theta by dt omega has a direction? Theta actually does have a direction, because if you look at the motion with respect to three different axes, देखो क्या होता है, हम काफ़ी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके बोल देते हैं. If you look at x, y and z, if you look at the motion of a particle, then you can always define a theta with respect to x, you can also define a theta with respect to y, and you can define a theta with respect to this. So you can have theta x, theta y, theta z. So theta can have a direction if you incorporate this, and then time derivative of the omega will have omega x, omega y, omega z. And angular acceleration will also have alpha x, alpha y, alpha z. It's the same thing with r. R is x I cap plus y j cap plus z k cap. Time derivative will be vx, vy, vz. Time derivative will be ax, ay, az. Same thing. Is the देखिए is the d theta have the same direction as omega? Yeah, omega x is dx theta x upon dt, omega y is d ये देखिए क्या होता है ना कि हम बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेते हैं. स्पेसिफिक एग्जांपल्स इन द सेंस कि वी आर डीलिंग विथ लाइक प्योर रोटेशन में हमने एक एक्सिस को डिफाइन कर दिया, और फिर हम ये बोलते हैं कि ये एक्सिस के अराउंड रोटेशन हो रहा है. तो अगर ये एक्सिस जेड एक्सिस है तो वी से थीटा एंड वी से ओमेगा, बट व्हाट वी एक्चुअली मीन इज थीटा जेड एंड ओमेगा जेड. बट हम वो रेफर नहीं करते हैं, मतलब हम इट्स लाइक समझ रहे हो, वी टेक अ हाईली पिक्यूलियर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम. बट इफ यू वांट टू जनरलाइज इट, तो जनरलाइज केस में with respect to every single axis you will have some component. मतलब हम इन प्रैक्टिस ऐसे एग्जांपल लेते हैं जहां पे एक्सिस इज फिक्स्ड एंड रोटेशन इज ओनली हैपनिंग अबाउट दैट एक्सिस. तो इसलिए हम ना थीटा को ना ओमेगा को एज ए वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं ज्यादातर केसेस में, बट जनरलाइज केसेस में इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. In general cases, you will have components with respect to an XYZ coordinate system. ये कह रहा हूँ. ठीक है? Okay. All right, guys, let's move forward. What I've done is I've taken 1 hour of your time to just give you a very brief recap, a very brief sort of a concise introduction to the various physical quantities and principles involved in rotational motion. You know, by making a comparison with translational motion, we talked about angular position, angular velocity, angular acceleration. We talked about angular momentum. We talked about torque. We talked about the Newton's second law.
rotational analog, we talked about some examples of conservation of angular momentum principle. Now, these are just basic sort of introductory ideas. I have some comments. Usually मैं full screen करता हूँ तो comments मुझे दिखता नहीं है. देवांशी सर सेम चीज़ आइस स्केटिंग में भी होती है. हाँ देवांशी आपने तो हाँ सही कह रहे हो. वही एग्जांपल मैंने भी लिया था. Vivek Babu, another example is formation of spinning neutron star or pulsar. Not sure what I think. Yeah, any kind of an intergalactic event where there are two binary stars, there is going to be conservation of angular momentum principle. So you will have these examples a lot. तो मेरे पास अभी 45 minutes है. So let us take a very simple topic to discuss. Before we go into moment of inertia and all these different kinds of calculations, आज हम 45 minutes एक छोटा सा टॉपिक करते हैं. And that topic is related to what is called rotational equilibrium. आप लोगों को याद है that we did something called translational equilibrium. हम जब initially पढ़ रहे थे. You guys remember we did a lecture on translational equilibrium. कहाँ करा था यार? कौन सा lecture था वो? Translational equilibrium याद है? हाँ, static equilibrium, sorry. Lecture number 3, we did a topic of static equilibrium where we basically balanced all the forces, right? We balanced all the forces along different directions and we tried to solve a few questions by balancing the various kinds of forces, right? वो translational या static equilibrium हमने करा था. There is also something, a small topic called rotational equilibrium, जो अभी हम थोड़ा discuss कर लेते हैं. Rotational equilibrium में क्या होता है? It's simply static systems, nothing else. Static systems where torque is involved. That's it. So static systems में क्या होता है? एक तो होता है आपके पास translational equilibrium, जो हमने पढ़ा है पहले. So if you have a static system, it definitely has translational equilibrium. And दूसरा जो है rotational equilibrium. Okay, तो translational equilibrium में क्या होता है? नेट फोर्स जो होता है वो 0 होता है. Net force 0 होता है and net From force all 0 directions. in all directions. Very good. So in translational equilibrium with respect to a point mass या center of mass of system, point mass या center of mass of system, we have net force or summation of all the forces involved in a system is equal to 0, not just in one, all directions. Okay, so you have summation of all the forces along the x-axis 0, summation of all the forces along the y-axis 0, summation of all the forces along the z-axis 0. Now usually we use translational equilibrium for point masses or center of mass of a system, but हम rotational equilibrium को कब use करते हैं? We use rotational equilibrium whenever we are dealing with rigid bodies. Okay, so whenever we are dealing with rigid bodies, जहाँ पे we are interested in the equilibrium of mass distributions, right? So orientation of extended bodies. Orientation of extended bodies. ऐसे situation में what do? We take the overall torque, the net torque of experienced by a system to be 0. So net torque experienced by a system to be 0. But net torque in which direction? With respect to any random point. Any random point. कोई भी random point के respect में you can choose the net torque to be equal to 0. Alright, so इसको समझने का एक ही तरीका है to do problems. So let me give you a problem and let me demonstrate to you how we can apply this concept.
Very simple question in front of you is this. A 50 kg, 4-meter long board is hanging from two chains attached to each end. A 100 kg man stands 1 meter from the right end of the board. Find the tension in each chain. Take 3 minutes. If you can solve it, good. नहीं तो फिर मैं solve कर दूंगा. Try कीजिए खुद से. 3 minutes. Vivek Kumar, your answer is correct. Very good. Rakesh Malik, correct answer. Good. Anyone else?
Monzurul and Bamdev, correct answer. Sampurnananda also correct answer. Swarnava also correct answer. Very good. बहुत अच्छी बात है. Very good. So these kinds of questions are possible. जहाँ पे you will have a mass distribution and you are dealing with a static system. So हमने जैसे पहले static system का problem करा था, उस टाइम पे we were only focused on forces and point masses. So point masses के ऊपर horizontal क्या force लगा रहा है, balance कर दो. Vertical क्या forces लग रहा है, balance कर दो. That is what we were interested in. But now instead of point masses, if we have rigid bodies, फिर हम क्या करेंगे? फिर not only the forces needs to be balanced in horizontal and vertical direction, there is something more needs to happen. The torque also needs to be balanced. That means there cannot be any rotation. So because there is no rotation, so the torque with respect to any random point also needs to be balanced. So ऐसे सवालों में जहाँ पे भी extended body होता है, rod हो या sheet हो या कोई object हो, you have to apply both translational and rotational equilibrium. So if I apply translational equilibrium, what can I do? Vertical direction में करने की कोई जरूरत नहीं है. Sorry, horizontal direction में करने की कोई जरूरत नहीं है. Vertical direction में कर लेते हैं. So what are the various forces acting on it? 50 kg mass or 50 kg 4 meter long board is hanging from two chains. So there is gravitational force 50 kg times g. A 100 kg man stands 1 meter from the right end. So there is gravitational force 100 g. So what are the various forces involved in the vertical direction? Tension T1 plus tension T2 in the upward direction and board or man ka weight in the downward direction. So 50 plus 100 g in the downward direction. Quite simple. Translational equilibrium. So T1 plus T2 is equal to 150 g. ये तो हो गया अपना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. अब मुझे कोई समझाओ रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे. How can we apply rotational equilibrium here? So first we need to find the center of mass because at that point the net gravity is acting. So it is a force, and this force is balanced by the torque of T1 and T2 combined. Both the torques that working in opposite direction, so both are cancelling out in this way. But is it necessary to find the center of mass? No, we can do it separately. No need to find the center of mass for No need. two cases. Yeah, no need, because there is no rotation. So not only there is no rotation about the center of mass, there is no rotation about any point. किसी भी पॉइंट के अराउंड रोटेशन तो हो ही नहीं रहा, तो हम किसी रैंडम पॉइंट के अराउंड भी कर सकते हैं. I mean, at least for the equilibrium cases. So I can choose a random point and perform rotational equilibrium about that point because there is no rotation about any point. So it doesn't really matter which point I choose. I can choose center of mass, but I could as well choose any other point as well. ठीक है, agreed? Yes, sir. So yeah, Kashan also correct answer. So we can choose any point, and sometimes mathematically speaking, choosing a random point is actually very helpful. क्योंकि मैं ऐसे choose करूँगा ताकि sum of the terms comes out to be 0. So let me choose the point O. Okay, sorry, point A. So I'll choose rotational equilibrium about point A. Now, of course, rotational equilibrium about point A choose करेंगे तो the summation of all the torque about point A must be equal to 0. ठीक है? तो what are the various torques involved about A? एक करके बताइए. What are the torque involved? Torque due to weight 50 g and 100 g and the T2. ठीक है.
So due to 50g, there is a torque in this direction. Due to 100g, there is a torque in this direction. Due to T2, there is a torque in this direction. And due to T1, there is a torque in this direction. ठीक है, तो टॉर्क के दो डायरेक्शंस हो गए हमारे पास. एक कौन सा डायरेक्शन हो गया? एक डायरेक्शन हो गया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा डायरेक्शन हो गया हमारा क्लॉकवाइज. अब सवाल यह है कि किसको मैं पॉजिटिव मानूं और किसको मैं नेगेटिव मानूं. तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ बताइए. यस सर, सो वही कह रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, Doesn't कोई matter. फर्क नहीं पड़ता. हाँ, एज लॉन्ग एज वी मेंटेन कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब है इफ वी आर डूइंग अ प्रॉब्लम और सारे एंटी क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मानता हूं और सारे क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव मानता हूं, तो परफेक्टली ऑल राइट. सारे क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मानता हूं, सारे एंटी क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव मानता हूं, परफेक्टली ऑल राइट. प्रॉब्लम तब होगी अगर आप एक रैंडमली कुछ क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लोगे, रैंडमली कुछ क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लोगे. प्रॉब्लम तब होगी. सो दैट इज द ओनली थिंग. जस्ट लाइक इन एनी काइंड ऑफ एन एक्सेस, मैंने अगर पॉजिटिव एक्सेस इधर मान लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या इधर मान लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज लॉन्ग एज वी मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ दैट थ्रू आउट द कैलकुलेशंस. सो सेम चीज यहां पे भी है. किसी भी चीज को आप पॉजिटिव मान लो वो आपके ऊपर है, बट यू मेंटेन कंसिस्टेंसी थ्रू आउट योर कैलकुलेशंस. तो हम कुछ भी कर सकते हैं यहां पे. लेट्स सपोज कि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान लेता हूं. तो अभी जो टॉर्क है बिकॉज ऑफ 50g दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? आई कैन से 50g टाइम्स, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है 50g जो फोर्स है और r, तो ये क्या होगा 50g टाइम्स 2 मीटर्स, राइट. और 100g का अगर मैं टॉर्क कैलकुलेट करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी 100g टाइम्स, ये भी परपेंडिकुलर है, दिस इज परपेंडिकुलर, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 मीटर्स, राइट. और अगर मैं T2 की बात करूं, सो T2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द रेडियल वेक्टर, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 मीटर्स. और अगर मैं T1 की बात करूं, सो T1 टाइम्स 0, क्योंकि ऑरिजिन में एक्ट कर रहा है, दिस इज इक्वल टू 0. दैट्स इट, दिस इज द इक्वेशन. बताइए ये क्लियर है सबको? ये इक्वेशन क्लियर है सबको? बताइए. Yes, guys, clear है? All right. So that's it. We have an equation. Just now it's a mathematical calculation. So 100g plus 300g minus 4t2 is equal to 0, or 400g is equal to 4t2, or t2 is equal to 100g. So if t2 is equal to 100g, thus t1 is equal to 150g minus t2, so therefore is equal to 50g. That's it. So t1 50g, t2 100g. Option number B is the correct answer. That's it. सर Answer is वैसे option. हमें तो फर्स्ट इक्वेशन पे भी मतलब हो जाता. ये जो T1 plus T2 is equal to 150, अगर हम सारे ऑप्शन चेक करें तो किसी का भी सम 150 नहीं बैठता, बस B का ही बैठता है. So that is called a smart way of doing MCQ based problems. तो वो एक स्मार्ट तरीका है. बहुत बार क्या होता है कि एग्जाम में टू सेव टाइम यू कैन डू दैट. इस तरह से आप स्मार्टली कंपेयर कर सकते हैं ऑप्शंस को. आप डायमेंशनल एनालिसिस भी बहुत लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस में. सो या दैट इज़ अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ कमिंग अप विद द आंसर. वेरी गुड, नो प्रॉब्लम. बट मैं टीचर हूँ तो मैं लेंथी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना. ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. एक और सवाल. Next question, very good question. ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है. रोटेशनल इक्विलिब्रियम का टॉपिक है, बट इट इज़ अ हार्ड प्रॉब्लम. ठीक है, इट्स नॉट एन ईजी प्रॉब्लम. एंड TIFR जैम में इस तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल है, जेस्ट में भी पॉसिबल है. इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ
डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, व्हाट्स हैपनिंग। लैडर, लैडर पता है ना, सीढ़ी जो होती है, हम लोग जो घर पे यूज करते हैं ना, जो सीढ़ी होती है ना, टू क्लाइंब अप द रूफ और टू डू सम वर्क। A ladder of mass small m is leaning against a wall as shown in the figure. A mass capital M is hung from the middle of the ladder. The wall and the ground have a coefficient of friction mu. Coefficient of friction जो है mu है. What is the value of the angle below which the ladder cannot remain in static equilibrium? सिंपल सा प्रॉब्लम है, आपके पास एक वॉल है, मैं अगर लैडर को ऐसे रख दूंगा तो वो स्टैटिकली रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप एक कॉमन सेंस यूज करो, थोड़ा सा मैं इसका एंगल अगर कम कर दूं तो भी वो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोगों को पता है कि देयर इज अ सर्टेन पॉइंट जिसके नीचे मैं अगर वो रख दूं तो वो नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं? बताइए, इट विल नॉट बी इन एन इक्विलिब्रियम पोजिशन एनी मोर। जस्ट फ्रॉम कॉमन सेंस, वुड यू एग्री? Yes, sir. If you have any stick or a ladder या anything that is inclined on a wall, उसका एंगल मैं अगर धीरे धीरे कम करूं ना, तो there is a particular angle beyond which it will not be in static equilibrium. वो slip करके गिर जाएगा, it will slip and fall. but ऐसा क्यों होता है? Why does it slip and fall? कोई बता सकता है? Why does it slip and fall? If I have something inclined on a wall, it remains static. एंगल को धीरे धीरे कम करता हूं तो देयर इज अ लिमिट बियॉन्ड विच अगर और भी एंगल को कम करूंगा वो तो स्लिप करके गिर जाएगा। क्यों गिरता है वो स्लिप करके? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन द फिजिक्स ऑफ इट? तो बताइए। मास बहुत ज्यादा हो जाता है कि मास तो मतलब कांस्टेंट है, फ्रिक्शन, मास इज कांस्टेंट। नहीं मास का जो, नो सर, एंगल की वजह से जो मास का जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन के अलावा वो ज्यादा हो जाता है। मास नहीं है, यू आर यूजिंग अ डिफरेंट वर्ड, यूज अ डिफरेंट। मास इज कांस्टेंट, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता। किस चीज का डायरेक्शन? फोर्स क्या फोर्स चीज? फोर्स किस फोर्स चीज का फोर्स? ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है तो ग्रेविटी कांस्टेंट है। नहीं सर, मतलब तो आई ग्रेविटी थिंक का अगर हम नॉर्मल रिएक्शन इसका ड्रा करेंगे हाँ, तो परपेंडिकुलर टू लेडर, तो उसके दो नॉर्मल कंपोनेंट्स आएंगे। नॉर्मल रिएक्शन तो चेंज करेगा, ठीक है, यस परफेक्टली सर, वैलिड। और नॉर्मल रिएक्शन चेंज करेगा तो हाउ विल इट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन? सर एक फ्रिक्शन भी तो होगा ना, तो वो फ्रिक्शन, यस। एट मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, फिर उसके बाद जब नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर वो फिसल जाएगा। सो फ्रिक्शन के लिमिट को क्रॉस कर जाएगा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट्स इट। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि देयर इज अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट, दैट इज प्रिवेंटिंग द स्लाइडिंग ऑफ द स्टिक और द लैडर। लेकिन एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के बाद इसका जो नॉर्मल ग्रेविटेशनल पुल है, इट विल ओवरकम द फ्रिक्शन इन सच अ मैनर दैट इट वोंट बी इन अ स्टैटिक पोजिशन एनी मोर। बताइए, शुड आई स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम या आपको थोड़ा टाइम दूं खुद से ट्राई करने के लिए? फिर थोड़ा टाइम ट्राई कीजिए फिर, टेक 3-4 minutes एंड सी इफ यू कैन सॉल्व इट। This is a question that involves not only balancing the forces but also balancing the torque. As simple as that.
क्या करें, स्टार्ट करें? Vivek, Babu, your answer. How did you reach your answer, Vivek? Did you calculate it or some other way? It is correct actually. Okay, it is correct. All right, let me start. Don't worry about it. It's a little hard problem, but once you break it down into all its parts, it's not going to be that hard. So let us try to understand what's happening here. There is a stick or a ladder or some mass distribution that is reclining on a wall. So, सबसे पहले, what is involved? Friction is involved. Right? So, can you tell me what is the direction of friction? Anybody? What is the direction of friction? पहले फोर्स डायग्राम को समझते हैं. फोर्स डायग्राम अगर हम सही से बना लेंगे तो प्रॉब्लम भी हो जाएगा. But first we need to understand and draw the force diagram properly. What is the direction of friction, guys? Come on. फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है? Come on, make a guess. What is the direction of friction? Swarnava, left side. Okay, but it depends like at which point you're talking about. Lowest point or the highest point? Vivek. Yeah. So left side is only true for the lowest point, yes. So if we talk about friction, the friction is acting at two different points at the point of contact. So at the highest point of contact, there is friction in this direction. At the lowest point of contact, there is friction in this direction. So let us name them. So let's say that this is friction F1, and let's say that this is friction F2. ठीक है? Okay. Let's try to first understand the force diagram. If we know how to draw the force diagram, everything else will fall into place. Now friction है तो friction इसलिए है because there is a normal reaction. But then the question is, what is the direction of the normal reaction? क्या होगा? Normal reaction का direction बताइए. What is the direction of normal reaction? Sir, perpendicular to ladder. Perpendicular to ladder? मतलब like this. Yes, sir. I was thinking like. आप लोग को याद है जब हमने फ्रिक्शन को मैंने या नॉर्मल रिएक्शन को मैंने इंट्रोड्यूस करा था, कहाँ पे इंट्रोड्यूस करा था? यहाँ पे. तो मैंने यहाँ पे जब नॉर्मल रिएक्शन को इंट्रोड्यूस करा था तो मैंने यहाँ पे करा था, बोला था दैट इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. यू रिमेंबर? तो अगर सरफेस ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो नॉर्मल रिएक्शन ये होगा. अगर सरफेस ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो नॉर्मल रिएक्शन ये होगा. यू रिमेंबर? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. बताइए, डू यू रिमेंबर? यस और नो? भूल गए? No, sir. तो सरफेस, इट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस. सरफेस मतलब द सरफेस दैट इज कंस्ट्रेनिंग द मोशन. ठीक है? द सरफेस दैट इज कंस्ट्रेनिंग द मोशन सरफेस के परपेंडिकुलर है. तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन. बताइए, हाँ कि ना? These are easy mistakes. Don't worry about it. But conceptually, I want you to understand. There are so many things here जहां पे गलतियां हो सकती है, तो सारी चीजों को अवॉइड करना है. सबसे पहला तो ये है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताया था, in any situation where motion is restricted by a surface, then normal reaction is always
परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, नॉट परपेंडिकुलर टू लैडर, परपेंडिकुलर टू सरफेस. क्यों? क्योंकि सरफेस इज कंस्ट्रेनिंग द मोशन ऑफ द लैडर. इट इज अ सरफेस दैट इज कंस्ट्रेनिंग द बिहेवियर और द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. तो वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? बताइए. एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ऑलराइट, तो नॉर्मल रिएक्शन को हम लिख देते हैं, दिस इज N1, दिस इज N2. ओके, अब हमारे पास क्या है? वी हैव द मास of the ladder, we have the mass of the object, we have the length of the ladder, which is L. So what are the other forces involved? Other forces are, what are the other forces involved? What are the other forces? Weight. Weight of the ladder and weight of the mass. So therefore you will have capital Mg as well as small mg acting in the downward direction. Now yahan pe the equilibrium only happens due to the friction. So what is friction? F1 is equal to mu n1, maximum value of friction. F2 is equal to mu n2. So what is the angle at which friction is maximum? That is the angle beyond which the ladder is going to slip. So the angle alpha beyond which the ladder will slip corresponds to maximum friction. ठीक है? I'm just explaining every single step so that you understand everything that is relevant to this particular problem and you avoid any mistake possible. I will give you another problem as homework. आप कोशिश करना कि उस प्रॉब्लम को करो. ये वाला प्रॉब्लम आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं. So this is the free body diagram. This is the force तो ये diagram. आप हाँ जी. अपर और लोअर जो पॉइंट है उसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कैसे दिखाएं? क्योंकि मतलब मुझे जहां से देख रहा हूँ तो फ्रिक्शन जो है वो एक साइड लग रहा है, दूसरी साइड कोई फोर्स. Yes, correct. तो वही करते हैं, ट्राई करते हैं. तो जहां पे भी एक्सटेंडेड मास होता है वहां पे दो ट्रांस इक्विलिब्रियम होती है. एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम. तो लेट अस स्टडी बोथ ऑफ देम. ठीक है, लेट अस फर्स्ट स्टडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. रिमेंबर व्हाट आई मेंशन थोड़ी देर पहले. Whenever you have some sort of a static system, there is a translational equilibrium which acts either on a point mass or on the center of mass of the system, and rotational equilibrium which acts with respect to any random point, either in the clockwise direction or in the anti-clockwise direction. तो हमें क्या करना है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हमें सिर्फ एक्स वाई जेड एक्सिस में फोर्सेस को देखना है एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास. ठीक है, आप भूल जाओ कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है. एज फार एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज कंसर्न, भूल जाओ कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है. आपको बस वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉराइजेंटल डायरेक्शन में नेट फोर्सेस को देखना है, बस दैट्स इट. तो आप ही मुझे बताइए, व्हाट आर द फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन द ओवरऑल सिस्टम? बस यही बताइए मुझे, व्हाट आर द फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन द ओवरऑल सिस्टम? सर F2, N1 और mg और स्मॉल mg. यस, करेक्ट. तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लिखूंगा तो आई विल राइट समथिंग लाइक F2 plus N1 is equal to small m plus capital Mg. Would you agree? Would you agree? Yes. हॉराइजेंटल डायरेक्शन में बताइए नेट फोर्स. नेट फोर्स इन हॉराइजेंटल डायरेक्शन, कम ऑन.
N2 minus F1. So F1 is equal to N2. Yes? All right. ठीक है. You have already obtained two equations now. Perfect. These are absolutely valid equations. Q? Because the system is in equilibrium and all the forces that are acting on the system are balancing each other out, both in the vertical and in the horizontal direction independently. Therefore, from there we get these two equations, these two force equations. Perfect है. तो अभी इनको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. Let us try to solve them. थोड़ा सा आप मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए. Let me finish this question first. So if I try to solve it, what is F2? F2 is equal to mu N2. N1 is just N1 is equal to capital M plus small m G. ठीक है. और what is N2? N2 is equal to, what is N2? N2 is equal to F1. So this becomes mu F1 plus N1 is equal to capital M plus small m G. But what is F1? F1 is again equal to mu N1. So therefore this becomes mu square N1 plus N1 is equal to capital M plus small m G. देखिए यहाँ पे जो है, it is just mathematical calculation. So you can play around in any way you like. But this is how I am doing it. So this gives us 1 plus mu square N1 is equal to capital M plus small m G. So one equation that we come up with is N1 is equal to capital M plus small m upon 1 plus mu square G. So this is one equation we come up with. And similarly, we can also figure out what is N2. Normal reaction हम figure out कर सकते हैं. N2 is equal to F1. F1 is equal to mu N1. तो N1 को अगर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये बन जाएगा mu capital M plus small m 1 plus mu square G. That's it. So using the concept of translational equilibrium, we have obtained the normal reactions N1 and N2. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, perfectly fine. But this is just half the problem. Let us try to do the second half of the problem, which has to do with rotational equilibrium. Rotational equilibrium करने की कोशिश करते हैं अभी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Just give me 5 more minutes, okay? Let me just finish this problem. Just 1 second. So, rotational equilibrium. ठीक है, यहां पे हमने ये इक्वेशन ऑब्टेन कर लिया, ये इक्वेशन ऑब्टेन कर लिया, इनको साइड में रख दिया. Now let us look at rotational equilibrium. सबसे पहले, do I need to calculate the torque with respect to some fixed point? No. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, we don't need to choose any fixed point. We can choose any random point. मैं अपनी मर्जी से कोई भी random point choose कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. क्यों? क्योंकि the overall system is in equilibrium, so any random point will suffice. So let me say that this is point number A, and let me say that this is point number B, and this is alpha. तो मैं कोई भी random point choose कर सकता हूं. तो I am going to choose with respect to point A. So with respect to point A, the summation of all the torque should be equal to 0. तो अभी धीरे धीरे हम सारे टॉर्क्स को डिफाइन करते हैं. तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, डू यू वांट टू चूज द क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव और नेगेटिव? आपकी मर्जी है. क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव भी ले सकते हैं. ए के रेस्पेक्ट में देयर इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन and there is an anti-clockwise direction. क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लेते हैं.
अब मुझे बताइए व्हाट आर द वेरियस टॉर्क्स इन्वॉल्व्ड. टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा ना. देयर इज गोइंग टू बी अ टॉर्क ड्यू टू F2. F2 की वजह से कोई टॉर्क होगा. सो कितना होगा वो बताइए विथ रेस्पेक्ट टू ए. कितना होगा? कम ऑन, यूज दिस फॉर्मूला जो मैंने अभी I थोड़ी देर. think F2L sin 90 plus L. यस, आप यही यूज कर सकते हो. यू टेक द परपेंडिकुलर वैल्यू कंपोनेंट. ओके, क्योंकि साइन थीटा भी आता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में. तो आप इसको लिख सकते हैं F2 L cos alpha. Yes or no? F2 L cos alpha. Yes or no? Yes, sir. Yes. And there is a torque due to N2. वो क्या होगा? N2 का क्या होगा ये बताइए. Sin alpha. N2 L Sin L. sin alpha. क्लियर है? Torque is equal to R cross F, which is R perpendicular F और RF perpendicular. आपकी मर्जी, आप जैसे लेना चाहते हो. It makes your life easier if you take just a component along the perpendicular direction. What other forces are there? Gravity. Gravity का direction क्या है? एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m g. What is the length? So it is acting at the center. तो क्या होगा? L/2 cos alpha. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो नेगेटिव कर दिया. What is the contribution due to F1 and N1? 0 is equal to 0. बताइए, ये कैलकुलेशन क्लियर है सबको? क्वेश्चन में जो ये मास हैंगिंग है सर, ये जो क्वेश्चन में मास हैंगिंग है ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ है क्या कि ये L/2 पर ही होगा? मिडिल ऑफ द लैडर लिखा है ना यहाँ पे, हंग फ्रॉम द मिडिल ऑफ द लैडर. तो मिडिल नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी फिर, बिकॉज द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. फिर वो हमें पॉइंट चूज करना पड़ेगा. एटलीस्ट दे मस्ट गिव अस सम इंफॉर्मेशन वेयर द मास इज. तो यहाँ पे मिडिल लिखा है तो इसलिए मैंने L/2 लिया है. ठीक है, बताइए एवरीबडी, इज दिस इक्वेशन क्लियर? क्लियर है बताइए, हाँ कि ना? Yes. If you can formulate this equation, 90% of your problem is done, because everything that follows is just mathematical calculations. So let us try to solve. So यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? L को हम निकाल देते हैं. Let's remove L. So then we are left with F2 cos alpha plus N2 sin alpha minus half capital M plus small m g cos alpha is equal to 0. So what is this? F2 is equal to how much? Mu N2. Mu N2 cos alpha plus N2 sin alpha. So this becomes equal to half capital M plus small m g cos alpha. Let's substitute the values of using 0.1 and 0.2. Let's suppose जहां जरूरत है N2 की ही जरूरत है, so using 2 कर देते हैं. So what is N2? N2 is equal to mu. तो ये बन गया mu square capital M plus small m 1 plus mu square g cos alpha. So mu into mu square. N2 is क्या है? N2 यही है ना? N2 is equal to mu m plus m 1 plus mu square g, है ना? तो यहाँ पे mu N2 cos alpha is mu square m plus m upon 1 g cos alpha. ठीक है, प्लस N2 is equal to mu
capital M plus small m 1 plus mu square g sin alpha is equal to half capital M plus small m g cos alpha. So therefore ये सिंप्लीफाई कर देते हैं, कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर टाइम्स म्यू को कॉमन ले लेते हैं. सो दिस विल बिकम, म्यू को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, जी को भी कॉमन ले लेते हैं, तो म्यू जी को कॉमन ले लिया, बनेगा साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m जी कॉस अल्फा. तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, जी आपका कैंसिल हो गया. सो व्हाट इज लेफ्ट, 2 म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा. तो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंप्लीफाई दिस फर्दर by writing that 2 mu sin alpha plus 2 mu square cos alpha is equal to cos alpha plus mu square cos alpha. So this becomes 2 mu sin alpha is equal to म्यू स्क्वायर कॉस अल्फा, है ना, कॉस अल्फा माइनस म्यू स्क्वायर कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस म्यू स्क्वायर कॉस अल्फा. सो देयरफॉर दिस बिकम्स 2 म्यू साइन, हमें क्या चाहिए था, अल्फा चाहिए था. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू स्क्वायर कॉस अल्फा. सो देयरफॉर टेन अल्फा अगर कर देंगे तो क्या होगा, या कॉट अल्फा कर दें तो कॉस अल्फा अपॉन sin alpha is equal to 2 mu upon 1 minus mu square. Therefore tan alpha is equal to 2 mu upon 1 minus mu square, or alpha is equal to tan inverse of 2 mu upon 1 minus mu square. सर वो कोट अल्फा है, वो से कौन सा है? कॉट है, सॉरी, यहाँ कॉट, तो ये कॉट इनवर्स हो जाएगा. So the correct answer is cot inverse 2 mu upon 1 minus mu square. ये हो गया 1 minus mu square. This is the answer, option number D. देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था, but as long as you focus on the essential concepts and you are able to break it down into the individual components, then it's okay, it's fine. ठीक है. सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आर यू एबल टू ड्रॉ द फोर्स डायग्राम. जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बट इस तरह का और क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां पे कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा विच इज एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ डिफरेंट फोर्सेस. सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लीज ड्रॉ द डायग्राम. ठीक है, टेक योर टाइम एंड ड्रॉ अ डायग्राम. ड्रॉ ऑल द फोर्सेस इन्वॉल्व्ड. कॉन्टैक्ट फोर्सेस होंगे तो दे आर यूजुअली परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिएक्शन इज यूजुअली परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. तो सारा डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले यू फिगर आउट द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. वो करने के बाद यू फिगर आउट the various torque involved either in the clockwise anti clockwise, किसी को भी पॉजिटिव मान करके you write down the equation. अगर इतना आपने कर लिया, इसमें कॉन्सेप्ट की जरूरत है, बाद में everything else is just mathematical substitutions here and there. You play around with the equations to come up with the answer. ठीक है, this is the main concept. मेरे पास एक दो और क्वेश्चन है, Sir, I think I will give it to you as a homework. हाँ जी. Sir, I think 10 alpha होगा नीचे, लेफ्ट हैंड साइड में साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा होगा शायद. नहीं, ये तो cos अल्फा बाय sin अल्फा लिखा, तब जाके 2 म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर हुआ ना. यस सर, सॉरी सर. ठीक है, कोई बात नहीं. देखिए ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, डोंट वरी अबाउट इट. एवरीथिंग इन मैकेनिक्स हैज टू डू विथ कैन यू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन इनटू द स्मॉल पार्ट्स, कैन यू अप्लाई द राइट कॉन्सेप्ट इन फॉर्मुलेटिंग द फोर्स डायग्राम and applying all the concepts of whatever it is involved, translational equilibrium, rotational equilibrium, and from the equations can you perform the mathematical substitutions to come up with the answer that is they are expecting. वही है, अगर छोटे छोटे पार्ट में हिस्सा में डिवाइड कर दोगे तो आप कर लोगे. 2-3 क्वेश्चंस और है, मैं इसको होमवर्क में दे दूंगा. प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. ठीक है, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो,
and you will get better at it. अगले क्लास में जो है we will start with moment of inertia calculations, because moment of inertia is a very important question, a topic in rotational dynamics. Calculation of moment of inertia of standard objects, calculation of moment of inertia of some weird shapes, वो सारा चीज़ हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे.